Any doubt? In previous lecture, we have discussed about semiconductor material, the group 4 materials. Any question or an arrangement diagram for insulators, conductors, and semiconductors? Say yes or no. Ma'am, no doubt. Okay. Now, next question is, why silicon is most widely used than germanium? Yes, Rich. Vishal. यस मैम हाँ जी. मैम सिलिकॉन में से मैम जो इलेक्ट्रॉन मूव करना इजी होता है जो मैम इसमें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है सर क्यों इजली कर सकते हैं? मैम सिलिकॉन का मैम लार्ज बैंड गैप होता है। ओके. और और मैम इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होता है। विशाल, आपने अभी बोला कि जो बैंड गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है इन केस ऑफ सिलिकॉन दैट इज मोर. अगर वो गैप ज्यादा है दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव और नॉट. आपने बोला इजीली मूव कर सकते हैं. हाउ इट्स पॉसिबल? यस. मैम इसमें ना जर्मेनियम में फील्ड मैम इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड हो जाते हैं सिलिकॉन में नहीं ओके. ऑल ऑफ मैम यू नो शेल व्हाट का इज द डिफरेंस पड़ जाता है यस फर्स्ट मेन डिफरेंस इज बिटवीन शेल. सिलिकॉन में कितने शेल्स होते हैं? मैम 3। 3. एंड इन केस ऑफ जर्मेनियम? Yes, I'm drawing here. Tell me, that is your nucleus, silicon first shell, then second, and this one is third. This third shell is your valence shell for silicon. Am I right? Yes, ma'am. Case of germanium, this one is your nucleus, then first shell, second shell, third one, and then fourth shell. Now tell me the difference. ये third है shell and this one is fourth shell. Now valence shell in germanium is in fourth shell or fourth orbit. Yes. Now you can see the difference. Vishal. यस मैम हाँ जी. मैम What is the concept of structure of an atom? मैम जो इसमें That is your first shell, second and third one. Energy of first shell is E1, then E2, then E3. In this case, it's 1, 2, 3, and this one fourth. E1, E2, E3, E4. Greater the radius, then what about the energy? If the radius of the shell or the orbit is high, then energy is high or less? Student, it's a two-way communication. Please respond. मैम क्या बोला आपने? हमें दोबारा रिपीट करना। See the difference between silicon and germanium. ये silicon का हमने बनाया structure. This one for germanium. यहाँ पे 3 shells हैं and this case 4 shells हैं germanium में. Now my question is कि shell का radius है इसमें R1, R2, R3. Greater the radius,
if the radius of the shell is more greater, then what is energy? मैम एनर्जी भी ज्यादा ही एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? मैम जितना बड़ा रेडियस होगा. जितना ज्यादा रेडियस. That means in this case the energy of the third shell is high, more as compared to second and one. Yes मैम. Yes students, rest all. Vishal. Yes ma'am. Similarly in this case, now your fourth shell is far from your nucleus. जर्मेनियम का जो न्यूक्लियस है, जो फोर्थ शेल है, वो उससे काफी दूर है. दैट मींस इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू 3, 2 and 1. Yes ma'am. That means the valence electrons of germanium are at larger distance as compared to silicon valence electrons. वो थर्ड पे है, ये फोर्थ शेल पे. That is one difference why silicon is most widely used. Second is valence electrons of germanium are more loosely bound. क्यों? क्योंकि ये इससे larger distance पे है, तो we can easily move the electrons from one state to another. ये valence shell है इसका fourth one. इससे electrons आप conduction band में भेज सकते हो easily with the help of some additional energy, whether it's in the form of light, heat or radiation. We can easily move it. क्यों? क्योंकि ये loosely bound है. Is that clear? Yes मैम. That means कुछ भी थोड़ी सी एनर्जी देके हम इलेक्ट्रॉन्स को इजिली मूव कर सकते हैं towards the conduction band. But in the case of silicon, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए as compared to germanium. So at high temperature, germanium becomes unstable than silicon. That's why silicon is widely used as a semiconductor material. Now any question? It's 5 marks question. Why silicon is most widely used? If yes, then justify your answer. Now any question? You can draw it. Yes, clear students? Yes ma'am. Okay. Yes मैम. Now next is your types of semiconductors. One is intrinsic and second one is extrinsic. Intrinsic means pure semiconductor जिसका purity level high होता है, and we can change the characteristics as per our requirement. One is your doping. तो second one is intrinsic impure semiconductors, जिसमें impurity added होती है. And in extrinsic semiconductor we have two types. One is n-type and second one is p-type. Now very first is pure semiconductor, that is intrinsic, जो जिनका purity level high होता है, pure form में होता है. And what are the examples of such materials? One is here germanium and second one is silicon. And we have already studied about the energy gap of silicon and germanium. You can note down these values. Silicon में 1.12 and germanium is approximately 0.66. Now, this is for structure for an intrinsic semiconductor. Example यहाँ पे semiconductor material में ली है silicon की. Why? क्यों? क्योंकि हम अब भी बोल रहे थे कि silicon is more widely used as compared to germanium, तो यहाँ पे germanium का लिया है. तो now tell me how many orbits or shells are there in silicon semiconductor material? शेल्स तो 3 रहेंगे. Okay. And जो आपका valence shell है, that means outermost shell of silicon कितने electrons को hold कर सकता है? कितनी capability है holding करने की? 4. Atomic structure and atomic number for silicon is 14. That is nucleus. Then first shell में 2,
सेकेंड में 8 एंड इन थर्ड शेल 4. बट इसमें 4 होते हैं, बट कितने कैपेबल है कि ये होल्ड कर सकता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? यस फ्रेंड्स. In outermost shell of silicon or any atom that is capable of holding 8 electrons, but silicon के केस में outermost shell में कितने electrons हैं? That is 4. Yes. So this is an example of intrinsic semiconductor and example is silicon. So the outermost shell of intrinsic semiconductor that like silicon has only 4 electrons. तो इसके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. वी कैन मूव इट टू द कंडक्शन बैंड विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी, बट इसके लिए एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए. और फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है? यस. What is the forbidden energy gap in the case of silicon? 1.12. 1.12. Yes. Now we have to form or create a covalent bond. अब covalent bond क्या होता है? अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्या मैं बना रही हूँ? 4 electrons are there in the outermost shell of silicon. Each of these 4 electrons form a bond with another valence electrons of the neighboring atoms. अब इसके neighboring में जो भी atom होएगा उसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ज्वाइन होंगे, देन फॉर्म अ क्रिएट अ कोवेलेंट बॉन्ड नेबरिंग एटम के साथ. ये 4 है, इसको और 4 चलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इज दैट इज कॉल्ड 1 बॉन्ड. तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं? हाउ मेनी बॉन्ड्स वी कैन क्रिएट? 4. यस. तो अब इसमें क्या होएगा? सो दिस इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम क्या कर रहे हैं? कैसे फॉर्म बॉन्ड बना रहे हैं? जस्ट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड. यू कैन नोट डाउन द पॉइंट. क्वेश्चन arises here. What do you mean by covalent bond? The atoms align themselves to form a 3-dimensional uniform pattern called as a क्रिस्टल. तो ये एक आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इंट्रिंसिक मटेरियल का. ये सिलिकॉन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में ये 4 है, 1 2 3 4. तो अपने नेबर के साथ ये फॉर्म होके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है. डॉटेड लाइन शोज अ कोवेलेंट बॉन्ड. प्लीज ड्रॉ इट ऑन योर नोटबुक. मैम वो जो आपने कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हाँ जी. लाइन बोली थी वो दोबारा बोलोगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें क्या हो रहा है? जस्ट अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड्स. द एटम्स align themselves to form a 3-dimensional uniform pattern that is called as a crystal, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल. तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. डन स्टूडेंट्स? यस मैम. तो ये सिलिकॉन का है. ये ऐसे ही आप जर्मेनियम का बना सकते हो. प्लीज ड्रॉ इट. This one dotted line shows the covalent bond, sharing of electrons. Any doubt? Yes. मैम ये जो आपने बताई अभी डॉटेड लाइन, ये Dotted line. represent करती है This covalent one. bond. This one. The dotted line Yes. encircling the 2 electrons in this
forming the or creating the covalent bond. क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे ये देखो, अब ये फोर, ये देखो आउटर ये वाला रह गया, दिस वन दिस वन दिस वन, अगेन ये क्या है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इनको भी कोई नेबरिंग एटम में नहीं गया तो ये भी फॉर्म बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, अदरवाइज ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा। इज दैट क्लियर? Yes. Okay. Have you drawn? हाँ जी, ड्रॉ कर लिया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Please note down one point here. The outermost shell of all the atoms is completely filled, and the valence electrons are tightly bound. Yes. हाँ जी सोनाली। मैम रिपीट करो। Okay. मैम रिपीट करो। Outermost shell of all the atoms is completely filled. Done? हाँ जी, लिख लिया सोनाली। Yes, ma'am. And the valence electrons are tightly bound to the parent atoms so no free electrons are available. No free electrons are available at absolute zero temperature. At absolute zero temperature. Done? Or such an intrinsic semiconductor behaves like a perfect insulator. उस केस में जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है मूव करने के लिए, उस केस में आपका जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर, दैट बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट insulator, bad conductor of electricity. No conduction is there, by because no movement, no flow of electrons are there. तो उस केस में at zero temperature, at absolute zero temperature, your intrinsic semiconductor behaves like a perfect insulator. Note down this point also. At absolute zero temperature, intrinsic semiconductor behaves as a perfect insulator. Done, friends? Yes, ma'am. Okay. Next, also note down the point here. I am writing here. Please note down. Charge carriers of intrinsic semiconductors. Please note down. Have you noted? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अभी हमने क्या स्टडी किया? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसे हमने सिलिकॉन की एग्जांपल ली, दैट जस्ट बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर। बट अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, व्हाट विल हैपन? योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब द थर्मल एनर्जी, उसको एनर्जी मिल रही है जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर सिलिकॉन की बात करें तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में,
तो उनको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। सपोज यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ लाइट उसे कोई एनर्जी प्रोवाइड होगी, व्हाट विल हैपन, ड्यू टू दिस दे ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, क्रिएट किया था, फॉर्म किया था, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड योर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टू द कंडक्शन बैंड। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सपोज कोवेलेंट बॉन्ड बन गया दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया और आपके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए। आई एम राइट स्टूडेंट्स? यस। यस मैम। तो बट क्या होगा इसके कारण, योर इलेक्ट्रॉन्स, जो सच इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री टू मूव, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे कैन मूव फ्रीली इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। once the electrons are dislodged from the covalent bonds then they become free। means covalent bond को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि हमने एनर्जी, कोई एडिशनल एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दी, जब उसने वो एनर्जी कंज्यूम करी, व्हाट विल हैपन, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गए और उनके कारण जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट हो गए। कंडक्शन बैंड में क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? एंड एट रूम टेम्परेचर योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट कंडक्टर, क्योंकि उसको एनर्जी मिली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हुए, they will jump from one state to another, means from valence band to conduction band। तो movement हो रही है, that means conduction हो रही है, that is a case of conductor। that's why हम कहते हैं सेमीकंडक्टर lies between insulator and conductors। are you getting my point? clear है? चार्ज कैरियर, हाँ जी मैम रिपीट करोगे? okay, in charge carrier of intrinsic semiconductor we have two cases, one is at absolute zero temperature। zero temperature पे क्या हुआ, your intrinsic semiconductor behaves like a perfect insulator। insulator means कोई conduction नहीं है, कोई movement नहीं हो रही थी, इसलिए कोई conduction नहीं है। is that clear? say yes or no। यस मैम। सेकेंड केस इज एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पे क्या होएगा, सपोज मैं कह रही हूँ कि रूम टेम्परेचर मैंने इतना ले लिया 23 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो आफ्टर एडिंग इट विद 273। अब क्या होएगा इस रूम टेम्परेचर पे, आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, दिस वन, यस, ये Yes, आपके ma'am. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई कोई एडिशनल सोर्स, सपोज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जैसे मैंने यहाँ बताया कि लाइट इसे प्रोवाइड कर दी जब कोई रेडिएशंस, व्हाट विल हैपन, ड्यू टू दिस दे ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में जाएंगे ही जाएंगे, जो कोवेलेंट बॉन्ड भी हमने फॉर्म किया था वो भी ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। जब वो ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन्स आपके जंप करके कंडक्शन बैंड की तरफ, वो जंप क्यों किए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या बन गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इन द क्रिस्टल, वो फ्रीली मूव कर सकते थे क्रिस्टल में। and once the electrons are dislodged from the covalent bond they will become free। जब एक बार आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट होने मींस रिमूव होने स्टार्ट हो गए कोवेलेंट बॉन्ड में से, तो आपके जो वो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन मूव फ्रीली। नाउ डन? यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any other question? Again, it's your 5 marks No, ma'am. question. Draw the crystal structure of intrinsic semiconductor and explain it in detail. You can note down this question. And also you can check or refer the previous year question papers of electronic devices. Done, students?
Yes, ma'am. Okay. ये था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. Second one is extrinsic semiconductor, that is impure form. Impure means इसमें क्या हम ऐड करेंगे, अब impurity ऐड करनी है कोई. Please note down the definition. Purest form में कुछ impurity doping agent ऐड अप कर दिया, that is called impure form, और उन semiconductors को बोलते हैं extrinsic semiconductor. अब वो कौन सी इम्प्योरिटी ऐड अप कर सकते हैं, ट्राइवेलेंट भी हो सकती है, पेंटावेलेंट भी हो सकती है. और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एट डॉप्ड सेमीकंडक्टर और इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स. प्लीज नोट इट. Yes, done, students? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, please note. After this, you have to tell me what is the definition and how we can define doping. We have discussed in previous lecture. कल lecture में हमने discuss किया था doping. And why do we need doping? क्यों इसकी जरूरत क्यों है doping की? हाँ जी, नोट कर लिया? Yes, ma'am. Okay, now tell me what is doping? मैम डोपिंग होता है मैम किसी भी विशाल. मैम डोपिंग किसी भी चीज की कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ऐड किया जाता है, Yes. इम्प्योरिटी ऐड की जाती है. किसमें ऐड अप करेंगे? ऐड अप सेमीकंडक्टर में ही करते हैं मैम. सेमीकंडक्टर. Ma'am, प्योरेस्ट, यस, प्योरेस्ट फॉर्म में कोई इम्प्योरिटी ऐड अप करनी, वेदर इट्स ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट. व्हाई? इन ऑर्डर टू improve the conductivity of semiconductor material. तो क्या है, what is doping? In order to change the properties of intrinsic material. Intrinsic material कौन सा था आपका? प्योर फॉर्म वाला, जो प्योर मटेरियल था सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना. दैट मींस कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी उसमें एड अप करेंगे. व्हाई? To improve the conductivity of that purest form or intrinsic material. This process is called as doping. और जो आप कुछ impurity इसमें add up करोगे, जो impurity added करते हैं, that is called as dopant. Please note down. The impurity added is called as dopant. तो डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक मटेरियल. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डोप्ड सेमीकंडक्टर और इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर. डन. प्योरेस्ट फॉर्म में कुछ इम्प्योरिटी एड अप की. तो एक्सट्रिंसिक मटेरियल कहाँ पे यूज होता है? यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स. एग्जांपल है लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, extrinsic semiconductors. So depending upon the type of impurities, we have two types of extrinsic semiconductor. One is n-type semiconductor and second one is p-type. n-type को बोलेंगे donor and p-type is acceptor. ये donor donate करेगा, acceptor accept करेगा. Any question up to this point? Please note down these two types.
दैट इज डिपेंड, ये दोनों टाइप्स किस पे डिपेंड करती हैं? इम्प्योरिटी पे। आप कौन सी इम्प्योरिटी एडअप कर रहे हो? आर यू गेटिंग? यस सिमरनजीत। Yes, ma'am. Okay. The rest all students, Manpreet, Aditya. Aditya, Yes, ma'am. is it clear? Yes, ma'am. Okay. Okay, Shusha.